Hello, Assalamu alaikum. Uh, Here I am Dr. Niyaz Mohammed. So today we have to talk about role of microorganisms in mineral transformation because we are studying the soil microorganisms and soil microbiology. So when microorganisms are present in soil, actually what they are doing, microbes are there, means they are doing something, especially वो कुछ न कुछ वहाँ कर रहे हैं और ऐसा वो क्या करते हैं आज हम उसके ऊपर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। उसके लिए आज का टाइटल का जो नाम का इंतखाब है वो है रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन मिनरल ट्रांसफॉर्मेशन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्चुअली अगर एक लफ्ज में या दो अल्फाज में मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो वो इस तरह है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में मौजूद हैं वो सॉइल के अंदर जो भी कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है व्हाटसोएवर ऑर्गेनिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन सॉइल that is converted into its elemental form। जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है चाहे वो दरख्त हैं, चाहे वो जानवर हैं, चाहे वो कोई और चीज है, चाहे वो घास है, एग्रीकल्चर है, जड़ी बूटियां हैं, व्हाटसोएवर ऑर्गेनिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन सॉइल that is in complex form। When this organic material is dying and going into the soil, so this is prime responsibility of microorganisms to convert this complex organic material into its elemental form। जो बेसिक ये जिम्मेदारी। अब दूसरा सवाल ये जनरेट होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऐसी कौन सी सलाहियत है जिसकी वजह से वो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को एलिमेंटल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके ऊपर हम तफसीलन बात करें। So, role of microorganisms in mineral transformation, especially जो essential elements हैं, जो किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल का एक बेसिक कंपोनेंट है, बुनियादी कलीदी किरदार अदा करते हैं, उनमें से अगर एक भी एलिमेंट मौजूद ना हो तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकता। सपोज किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर जो बेसिक चीज है, सबसे पहली चीज, सबसे अबंडेंट मकदार में वो कार्बन है, दूसरा नाइट्रोजन है, तीसरा फास्फोरस है और चौथा सल्फर। ये बेसिक एलिमेंट है, मेन एलिमेंट है। ये सब ऑर्गेनिक फॉर्म में, जब कोई लिविंग मटेरियल मौजूद है तो उसके अंदर ये ऑर्गेनिक फॉर्म में मौजूद है। जब वो लिविंग फॉर्म की डेथ हो जाती है तो वो ऑर्गेनिक मटेरियल दैट इज गोइंग इनटू द सॉइल एंड here microorganisms are present in soil. These are converting this organic material into elemental form। किस में? Carbon, nitrogen, phosphorus and the sulfur। So today we have to talk on this। Soil is a living system। हम इस पर तफसील में बात कर चुके हैं। Soil एक living system है। 1 gram of soil contains billions of microorganisms। इसमें बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, आर्किया हैं, जो कुछ भी हैं, बहुत सारे। The goal transformation of complex organic material metal into simple mineral form, which is called mineralization। जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको एलिमेंटल फॉर्म में, मिनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की है और इस प्रोसेस को मिनरलाइजेशन कहा जाता है। एंड वाइस वर्सा इमोबिलाइजेशन। जब यही ऑर्गेनिक, यही एलिमेंटल फॉर्म्स, यही कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम, दीज आर कन्वर्टिंग इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म। प्लांट जब इसको अपने रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपने मास के अंदर उसको एकोमोडेट कर देते हैं, उसको हम कैप्चरिंग या उसको हम इमोबिलाइजेशन कहते हैं। तो ये सॉइल मिनरलाइजेशन क्या है? ऑर्गेनिक मैटर मिनरलाइजेशन के अंदर जो मेन की पॉइंट्स है वो जो जिनका कलीदी किरदार है उनमें डिकम्पोजर है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का वो ग्रुप जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को कन्वर्ट करता है इनटू एलिमेंटल फॉर्म्स। All those microorganisms which have this responsibility, which have ability to produce
which have ability to produce enzymes to convert this uh, organic form into elemental form are called decomposers. And secondly, nitrogen fixers, those microorganisms which have ability to acquire, to absorb atmospheric nitrogen into elemental form, into organic form. So those are called nitrogen fixers and solubilizers. That material, uh, that substance which can dissolve these all organic matter and these all elemental forms are minerals into soluble form. After solubilization, जब ये dissolve होगा पानी के अंदर तो then it will be able to be absorbed by the plant roots. So that's the first one. We have to talk on carbon soil. Carbon is the major element of any living organism. It is the backbone of the inorganic material and living substances are living organisms. Microbes act as the primary decomposer, balancing the atmospheric carbon dioxide and the soil organic carbon. What happens when living organism is dying? It is going into the soil. So primary decomposers, these are producing enzymes and uh, converting this organic carbon into elemental carbon. Some carbon is going into the atmosphere, that is called carbon dioxide, and some is coming into the soil, that is called soil organic carbon. Mineralization means breakdown of cellulose, lignin, and protein into carbon dioxide aerobic form. Aerobically, if it will be decomposed, it will convert into the carbon dioxide uh, form, or if anaerobically, it will be converted into uh, elemental form, it will convert into uh, CH4, methane. So humification, conversion of organic matter into stable humus, improving soil structure. When these elements which are present in organic matter and converting into elemental form by means of microbial enzymes going into the soil, and these are making aggregates in soil liquids, and this process is called humification. And this humification process improves the soil structure, makes it uh, fertile, and reduces leaching of nutrients and the minerals from the soil. These become an aggregating form where plant roots easily can grow, easily can proliferate, and so it improves the soil. इसी तरीके से soil करामद soil में convert होती है, basic सरफेस सॉइल में कन्वर्ट होती है, क्योंकि जो एलिमेंटल फॉर्म में ऑर्गेनिक मैटर कन्वर्ट हो चुका है, जब वो सॉइल के अंदर जाता है तो सॉइल के अंदर जो भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं या सॉल्यूशंस हैं, उनके साथ वो एलिमेंट कोलाइड कर लेते हैं, उनके साथ वो रिएक्ट कर देते हैं, एक विस्कस सा विस्कस मटेरियल बनाते हैं। उस प्रोसेस की ह्यूमिफिकेशन कहते हैं, जिससे सॉइल फर्टाइल भी होती है, स्टेबल भी होती है, और उसकी स्ट्रक्चर इंप्रूव भी होती है। तो उसमें कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना रोल प्ले करते हैं, की माइक्रो ऑर्गेनिज्म इक्वल हिस्सियर। सबसे पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है स्टेप्टोमाइसिस, जिसको हम एक्टिनोमाइसिट्स कहते हैं, और दूसरा फंजाई है जिसको हम एस्परजिलस कहते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना ओके
We were talking about key microorganisms over here. So those microorganisms were, if you will see over here, streptomyces, which are present in soil, playing key role to convert organic carbon into elemental form or into atmospheric carbon dioxide. And secondly, aspergillus, which is fungi, which are playing the major role to convert cellulose into its simplest form. So we want to see here let me fix this issue. There is some small problem. So now we have to see in carbon cycle how carbon takes place in our environment. That we have to see carbon cycle. We know the process of photosynthesis very well. Photosynthesis is the process in which organic matter is developed. Our organic matter is formed in presence of sunlight through photosynthesis. And during this process, the plant is uptaking minerals and elements from soil. And secondly, the carbon dioxide, this organic material, when it is going into the soil, it goes in form of the dead organic material. Where this dead organic material and waste products are mineralized and decomposed by microorganisms, जिसमें हमने जो है ना स्ट्रेप्टोमाइसिस एक्टिनोमाइसिस और फंगस का हमने जिक्र किया, वो इस एरिया में, इस जोन में जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल जमीन से, चाहे वो इन फॉर्म ऑफ प्लांट, फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर, इन फॉर्म ऑफ animal, whatsoever is going to die into the soil, that is going into soil. And where microorganisms playing vital role to decompose this organic material into elements. So what happens? Some proportion of these elements are absorbed by root respiration. And some, when we are burning into the soil in form of industry, in form of fuel, in form of coal, that is going into the atmosphere. Let's transportation and factory emissions that is going, and carbon dioxide, amount of carbon dioxide increasing in atmosphere. And this carbon dioxide is used for the purpose of the photosynthesis. So this is the whole cycle of the carbon in this planet. Carbon dioxide is present in atmosphere in gaseous form that is utilized by green plants in form of the photosynthesis to convert it into organic form. This organic form is going into the soil after that, where microorganisms are decomposing this organic material and converting it into elemental form. The gaseous forms are going into atmosphere, and some elemental forms are also absorbed by plant roots to make organic material. So this is all activity of microorganisms. Second thing, we have to see the nitrogen cycle. You know, and we all know very well that nitrogen is the most essential element of any living organism.
किसी भी जानदार के अंदर जो प्रोटीन्स मौजूद हैं, जो डीएनए मौजूद है, आरएनए मौजूद है, उन सब के अंदर नाइट्रोजन एक बेसिक एलिमेंट। इफ यू आर स्टॉपिंग नाइट्रोजन फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, so that organism will be unable to grow, क्योंकि उसमें प्रोटीन से नहीं बन पाएंगी, कार्बोहाइड्रेट से नहीं बन पाएंगी, आरएनए नहीं बन पाएगा, डीएनए नहीं बन पाएगा, अमीनो एसिड नहीं बन पाएगा, सो देयर ऑर्गेनिज्म will not develop. So nitrogen is the second important element in this regard. Nitrogen is the most common limiting nutrient, and its cycle is almost entirely microbially dependent, microbially driven. जो जो ये नाइट्रोजन है, इसको ऑर्गेनिक फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, जितने भी फॉर्म्स में इसको ट्रांसमिट किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है, उन सब में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कलीदी किरदार। नंबर वन थिंग, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है, उसको कन्वर्टिंग this thing you will see N2 elemental nitrogen gas into ammonia NH3 by microorganisms through symbiotic reaction, rhizobium in the culm of plant roots, and the free living azotobacter. These two microorganisms, rhizobium और azotobacter, ये microbial population जो responsible है, जो environment के अंदर elemental nitrogen है उसको organic form में convert कर, उसको अमोनिया में NH3 में कन्वर्ट कर। when it is present in form of NH3 in soil, ammonia जिसको कहते हैं, it converts into nitrites by means of nitrosomonas microorganisms, and these nitrites are converted into nitrates by means of the nitrobacter. So microorganisms are again playing a vital role to convert uh, different nitrogen into different forms. Denitrification is the process in which nitrogen is returned to atmosphere as N2 or N2O, pseudomonas. So microorganisms again responsible हैं कि environment soil से इसको atmosphere की तरफ shift करें. If you will see here in this diagram, we will find it very clear. So nitrogen cycle, if you will see our here, atmospheric nitrogen which is present in form of N2O. When we are seeing handling, it is also is due to the nitrogen. So what happens when every living organism is dying in on global surface? This is going into the soil. Every living organism contains nitrogen in different forms, in form of protein, in form of carbohydrate, and in form of DNA, in form of organic material that is going into the soil. That is going into the soil. So different microorganisms are dealing with this dead organic material and convert them into in different forms. Suppose dead animals and plants, these are going into the soil, and these microbial decomposers, bacteria and fungi decomposing and forms ammonia. Process is called ammonification, and at the end result forms NH3. This NH3 converts nitrification process by means of microorganisms. It converts into nitrites. Again, it converts into nitrates in NO3, and this NO3 converts through denitrification process is going into the atmosphere in form of fossil fuel and in form of microbial denitrification process which is going into the atmosphere. So it is present. So it is present in atmosphere in form of N2
from where microorganisms are converting, which are present in plant roots. So nitrogen fixers are converting this environmental nitrogen into organic form, and some NO2 coming in form of water to the soil. So this is very interesting. And uh, we are going to stop today up to this. Here we have indicated something human activities. Some nitrogen is converting due to human activities, which mostly is responsible to uh, unbalance the elemental forms into the atmosphere, which are causing very unnatural consequences in planet. And these are natural activities. If the human will allow to the natural activities, uh, it will go smoothly. If sometimes it is disturbed by human activities, it cause disasters. So we are going to stop up to this, and in second class we will read more.